Hello student, welcome to my channel. Myself Rajiv Maurya, and today we are going to discuss a very important and very interesting topic that will be on bar graph. Bar graph is a topic which belongs to the chapter of data handling. In the last video, we have discussed the various points, that is the mean, median, mode, and I hope you enjoyed with that video. So today we shall discuss completely new topic which will be the bar graph. Today we shall go along the bar graph and we come to know the bar graph what represents. What is the meaning of the bar graph and how we shall use bar graph to represent data. So let us see what the meaning of the bar graph. A bar graph represent the value of quantity of a data. A bar graph represents the value of quantity of a data. Okay? The length of bar graph represents the quantity of the data. The bar which has the greater length having the quantity more, and the bar having the small length, its quantity is also less. Okay, for example, we can see that colors and number of children. Here a data is given in this form. Colors and number of children who like the colors. Red, green, blue, and so on. Okay. Suppose that the red color liked by number of students is 41, and here 30, and here 45. If we draw the bar graph, then we can see that the length of bar graph, the length of bar of blue color will be largest. Why? Here we can see that the number of students for the blue color is maximum. Therefore, the quantity of the blue color liked by the student is maximum, so that the length will be the large for the blue color. For green color, the number of students 30, which is the less quantity of student who like green color, and 41 is the mediator. It has neither maximum nor minimum number of children who like the color red, so that the length of bar graph will be larger, for which the number of students is maximum, and the length of bar graph will be smaller, for which the number of students or number of children is less or minimum. Okay, so this can be represented by bar graph. So let us see what is the bar graph. A bar graph is a rectangular figure which represent the quantity of data. So this rectangular shape is known as bar graph. This is known as bar. How we draw the bar graph? So let us see how we draw the bar graph. In order to draw the bar graph, most of the time we shall need
the graph paper. In the graph paper, the measurement is already measured. So when we use the bar graph, we needed to label the axis. But if we draw the bar graph on a plain paper, then first of all we have to label the axis as well as also distribute the length. So here we can see that x and y. These two mutually perpendicular lines x and y are known as axes. The horizontal line is called x-axis and the vertical line is called y-axis. And the plane that lie between these two mutually perpendicular lines is called quadrant. And in this plane we draw the bar graph. So first of all, we shall label the graph, label the axis and distribute the length. So the point at which these two mutually perpendicular lines join is called origin. And generally the origin represented by O. Now we divide them by 2 cm each. Suppose that this 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly here 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Here the on horizontal line we shall represent the colors. The horizontal line represent colors. Okay. And the vertical line represent number of children. So here we can say number of children. Okay, this represents number of children. Now here the length between one part of this. Okay, so we can say 1 centimeter is equal to 1 centimeter is equal to 10 children. Okay, 10 children. Here the one part that is the length of 1 centimeter and this 1 centimeter represents 10 children. So from 0 to 1 this will be 10, 20, 40, 50 and 60. Okay, and here this will be red, blue, red, green and blue. Here three colors given and these vertical line represents number of students who like colors and horizontal line represent the color. So as the data we have seen was the red color liked by children was 41, green color was 30 students and blue color liked by 45 students. So in the first we can see that the red color liked by 41 students. So we can say that the point 41 is light just above the 40 and here we draw a rectangular shape like this. Okay, so this represent 41 children who like red color. Similarly for green color we can see that 30 children like green color. So sorry, here 30, 40, 50. So this graph will also move towards this. This is the 41. Okay. Green color liked by 30 students. Therefore, for the green we get this. This graph
represent 30 students who like green color, and for blue color we can see 45, that is this point represent 45, that is the 50-50 length of from 40 to 50. This length is divided into 50-50, therefore this point represents 45, and hence we get the graph like this. This graph represents 45 students. This graph represents 45 children who like blue color. Okay. So this is the bar graph, and in this way we draw the bar graph. आपको जब भी बार ग्राफ ड्रा करना होगा, आप क्या करोगे, अपने रूलर में एक फिक्स डिस्टेंस लेकर, सपोज करो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर आप इनको डिवाइड कर लोगे। 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के आप इसको भी डिवाइड कर लोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टू गिवन द रेफरेंस। आप यहाँ पर रेफरेंस में ये लिखोगे कि जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपने यहाँ पर कवर किया है, वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस ग्राफ को देखा जाए तो इसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड दैट इज द 10। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 से 1 ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, इसके बीच में 10 स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, फिर इसके ऊपर 10 स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, और इस तरीके से हर 1 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है उसको 10 चिल्ड्रन के बराबर रख दिया गया है। अब क्वेश्चन ये था कि रेड कलर को पसंद करने वाले चिल्ड्रन की संख्या कितनी है, 41 है। ग्रीन कलर को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 30 है। और ब्लू कलर को पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 45। तो हमने अभी बताया कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्टिकल लाइन पे हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप इस पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस पर कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब आप ऐसे करोगे, इसका अपोजिट करोगे, तो ये जो ग्राफ है ये वर्टिकल नहीं बनके हॉरिजॉन्टल बनेगा। तो ग्राफ वर्टिकल बनता है कि हॉरिजॉन्टल बनता है डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपने जो ग्राफ बनाया वो ग्राफ क्लियर है कि नहीं है। तो इसमें हमने क्या किया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे थे, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे कलर्स को रिप्रेजेंट कर लिया, और वर्टिकल लाइन पे हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को क्या किया, लिख लिया। अब यहाँ पर देखो तो रेड कलर की अगर बात करें, पहले रेड कलर ही दिया हुआ है, तो रेड कलर को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 41। तो हम इस पर काउंट करेंगे कि 40 कहाँ है, तो 40 यहाँ पर है। अब 40 और 50 के बीच में कहीं पर 41 होगा, तो सपोज कर लिया कि यहीं पर ठीक इसके जस्ट अब 41 बिलोंग करता है, तो यहाँ पर 41 हो गया। तो हमने 41 की हाइट्स के बराबर हमने क्या किया, एक ग्राफ ड्रा कर लिया। तो ये रेक्टेंगल जो हमने ड्रा किया है उसकी हाइट इस 41 के हाइट के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो 41 का ये जो ग्राफ होगा ये रिप्रेजेंट करेगा कि रेड कलर को लाइक करने वाले चिल्ड्रन की जो संख्या वो कितनी है, 41। ऐसे ग्रीन कलर को देखो तो यहाँ पर ग्रीन कलर को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 30 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा 30 है, तो ये जो डिस्टेंस, ये जो हाइट है इस ग्राफ का, ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 30 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करेगा जो ग्रीन कलर को पसंद करते हैं। ऐसे ही हम ये ब्लू कलर के लिए दिखाया कि ब्लू कलर को पसंद करने वाले चिल्ड्रन का संख्या कितना है, 45। तो इस तरीके से हम 45 को लिख सकते हैं। Okay, so I hope student everything is clear how we have to draw the bar graph. Okay, we shall discuss more and more questions on this. So first of all I would like to suggest you please try to solve more questions about the bar graph at your home. I will solve more questions, some more questions which belongs to the bar graph in my next video. So if you have any doubt, then mention a comment in the comment section. I will clear in the next video. So we shall meet in the next video. Till then, goodbye.